आज का वीडियो प्रॉपर्टी बेचने के बारे में नहीं है. दिस इज नॉट अबाउट प्राइसेस, इट इज नॉट अबाउट रिटर्न्स. दिस इज एन एडवाइजरी कन्वर्सेशन. Over the years, I have observed a very clear pattern in the Gurgaon resale market. Most properties do not fail because the market is weak. They fail because the process is broken. In this video, I want to explain why nearly 80% resale listings in Gurgaon fail and what people usually misunderstand about resale. If you are a seller, a buyer, or an NRI, this perspective will help you make better decisions. रीसेल के बारे में सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है, people believe that if a property is good, it will automatically sell. That is a myth. In luxury and premium resale, even very good properties fail. Not because of demand, not because of location. They fail because there is no structure. Too many brokers handle the same property. There is no single point of responsibility. Pricing lacks a clear logic, and the market is filled with noise instead of clarity. Another common assumption is, let's test the market first. Market testing sounds harmless, but in reality, it weakens the listing from day one. Resale is not a testing game. Resale is a positioning game. Let me share 3 structured reasons why most Gurgaon resale listings do not close. Reason 1, ज़्यादातर sellers properly represented नहीं होते. They are only listed, and there is a big difference between being listed and being represented. When 5 or 6 brokers handle the same property, no one takes responsibility. Pricing keeps changing, messaging keeps changing, and buyers start feeling confused. लग्जरी रीसेल में कंफ्यूजन ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है. देयर इज अ कॉस्टली मिस्टेक मैनी सेलर्स मेक. मोर ब्रोकर्स डू नॉट क्रिएट मोर डिमांड. इन मोस्ट केसेस दे क्रिएट लेस ट्रस्ट. रीजन नंबर 2, प्राइसिंग अक्सर इमोशन के बेसिस पर डिसाइड होती है. माई नेबर्स होल्ड एट दिस प्राइस, आई हैव इन्वेस्टेड सो मच, I need this number. This is not market logic. Luxury buyers do not negotiate randomly. They evaluate risk, clarity, and credibility. An overpriced listing does not attract serious buyers. It attracts bargain hunters, and it destroys negotiation power. Here is a myth people believe: reducing the price later does not reset perception. The market always remembers the first impression. Reason number 3, luxury resale को noise नहीं चाहिए. It needs silence and control. When a property appears everywhere, buyers assume something is wrong. Serious buyers prefer controlled exposure, clear documentation, and one accountable advisor. There is also an honest limitation that must be understood. Even with the right location and correct pricing, a property will not sell unless the seller is ready for discipline. Structure requires patience, and patience is uncomfortable. ये पर्सपेक्टिव उन सेलर्स के लिए है जो एक क्लीन प्रोफेशनल एग्जिट चाहते हैं. इट इज़ फॉर बायर्स हु वैल्यू क्लैरिटी ओवर हाइप. ये उन एनआरआईज के लिए है जो केओस के बिना कंट्रोल चाहते हैं. दिस अप्रोच इज़ नॉट फॉर एवरीवन. ये उन सेलर्स के लिए नहीं है जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं. इट इज़ नॉट फॉर पीपल हु वांट टू ट्राई 10 ब्रोकर्स एट द सेम टाइम. और ये उन लोगों के लिए भी नहीं है जो रीसेल को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं. There is no judgment here, only alignment.
लग्जरी रीसेल रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, नॉट स्पीड। अगर मैं इस पूरी बात को समराइज करूं, most Gurgaon resale listings fail not because of the market but because of how they are handled. Representation matters, pricing discipline matters, and controlled execution matters. रियल एस्टेट में क्लैरिटी हमेशा अर्जेंसी से बेटर होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।